Good evening, ladies and gentlemen. I hope all are in good elements, good mood, Josh, Wosh, that everything has to be there on the eve of, all what? 14th February is what we all know, right? Valentine's Day. So that's the time, excitement time for all. Why only leave it to the youngsters? हम भी खुशी मनाएंगे वैलेंटाइंस डे का, प्यार बांटेंगे. Why not? So the song that I remember when we talk about love is the one from Pyar Ka Mausam. नि सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे आए रे हरी हरी. Beautiful song, right? बोलो ना बोलो मुख से गोरी. This is what energizes people. That is my very strong belief. Love again is an enabler. Pyar, mohabbat, ishq, we can affection, so many ways of we can talk about it. So here today we are going to discuss about the impending Valentine's Day love, or maybe the love that has already been there for ages. Especially in our cases, we are all senior citizens, so we have been in love for donkey's years, and or we have decided or sometimes fallen on our own without our knowledge, or over a period of time you have developed that. So when it comes to love, so that is something which we all can discuss today. And love again means it's not just plain love and love and love always. Thoda sa note joke, there is a little bit of fight. It's not fight actually. Okay, थोड़ी सी बातें हो जाती है, तो अनप्लेजेंटनेस हो जाती है, बट फिर भी कोई रूठ जाती है तो फिर मनाना पड़ता है. सो कौन मनाता है? बस ये तो हमारा ही काम है, मनाना. रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना देंगे. याद है ज्वार भाटा? So, all these things come into play when there is love in the air. Ajkal, this is the time. Actually, to be very honest, I came to know of Valentine's Day only in the year 1988. Okay, I had absolutely no clue. मैं तो अपने काम से एकदम मुसरिफ. I was busy in Hyderabad in our guest house, काम कर रहे थे, प्लांट में जाना था, and so on and so forth. So one of the guys who was born on 14th February of 1967, 21 साल का लड़का, he came to our guest house from he was part of our organization, just freshly joined. मैं तो मेरा तो तजुर्बा काफ़ी था, 12 साल का तजुर्बा था उसमें. And this boy was new, सुधांश पंत उसका नाम है, आजकल वो IPS में है, बड़ा आदमी बन गया है वो. So he said, I was born on Valentine's Day, 14th February 1967. बोला ये वैलेंटाइंस डे क्या होता है यार? अरे यार, दैट इज अ डे ऑफ लव, ही सेड. बोला यार हमको तो ये सब पता ही नहीं यार. बोला यार तुम, यू आर ओल्ड वर्जन, समथिंग लाइक दैट ही मेंशन. मैं बोला नहीं यार, आई एम ओनली 33, आई एम नॉट वेरी ओल्ड एट दैट टाइम. सो दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट इज वैलेंटाइंस डे. देन आई सॉ द वे इट हैज बीन पिक. उसके बाद ये भी हमारा सौभाग्य था कि 1991-92 में यूएस जाना पड़ा. एंड the way they celebrate or Valentine's Day, बोले तो क्या, my goodness, we were compelled to go to some particular, not a pub, but some place where there was a major event. अंदर जाने के टाइम हाथ में वो लोग छापा मारते थे कि हाँ एंट्री हो गया तुम्हारा. It was a Friday, February 14th of 1992. फिर मैं देखा यार लोग भाग तो पागलों जैसे कर रहे हैं वहाँ पे. They are going crazy absolutely. कोई जोर जोर से गाने चालू है, इंग्लिश गाने, तो हमको समझ में नहीं आती है. इट्स ऑल वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, बट ऑल वी कुड सी वाज एनर्जी. यार बहुत बड़ा, प्यार में बहुत एनर्जी है. दिस इज समथिंग विच इज वी कांट डिस्प्यूट. सो ये प्यार का मौसम है, तकरार का मौसम है, इकरार का मौसम है, और इनकार का मौसम है. तो इनकार करे तो इकरार कराना है हमको उसका. So we will look at all aspects of love. कितने varieties of love है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यार है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है, मियाँ बीवी का होता है, माँ बेटे का होता है, बाप बेटे का होता है, नलन भाभी का होता है, सबका एंड फ्रेंड्स के बीच में भी होता है. इट वाज वेरी व्हेन, तो हमारे अपने कोई निकल जाते हैं, खो जाते हैं हमसे, दूर चले जाते हैं, और फाइनली दे गो फॉर देयर हेवनली अबोर्ड. तो बहुत दुख होता है कि वेदर यू हैव बीन क्लोज इनफ नॉट इनफ, बट जब भी हो जाता है तो तकलीफ होती है. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फीलिंग. लव इज अगेन अ फीलिंग. अमर रहता है सम ऑफ दिस थिंग्स, एंड इट इज नेवर टू लेट टू फॉल इन लव. ऐसा भी है. लोग आराम से, we have seen a couple of second innings people came and spoke here also. So they got married at the age of 60. So all these things happen. 59 60 में भी आदमी का प्यार आ जाता है लाइफ में. So Valentine's Day, why leave it only for the youngsters and only kids? तो हमने सोचा हम लोग भी थोड़ा बहुत आज प्यार और नोक-झोंक, मस्ती, इसके बारे में बात करेंगे. And maybe everyone has a different experience of falling in love. ये आज आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, खुशी खुशी शेयर कर सकते हैं. और रियलाइजेशन भी जब भी होता है, आपको पता नहीं चलता है when you have fallen in love. कभी आदमी जाने के बाद लगने लगता है कि यार आई रियली मिस हिम, आई ट्रूली लव्ड हिम और हर. ऐसे भी होता है. These are all various perspectives, ये नजरिया है. So अलग अलग रवैये से हम देखेंगे तो पता चलता है हाउ मच वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ये भी सामने आता है. अनलेस समवन पॉइंट्स आउट कि भैया यू आर इन लव, आपको पता नहीं चला कि यू आर फॉलन इन लव. सो देन इट स्ट्राइक्स, देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, और दीवानापन भी आ जाता है. अगर आदमी प्यार में गिर जाता है, पड़ जाता है, फॉल्स इन लव, so anything can happen in that particular situation. So ये मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि all of us will have some tale, some episode, some story of falling in love, and शादी होने के बाद नोक झोंक, and how it has been settled, any major differences, difficulties that we have come across, how it has been resolved. And I hope there is no story of separation here, क्योंकि we want to be together in this. Separation होता है किसी किसी का, sometimes it happens, but then I think anything that happens for the good करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए. So we will not talk too much about it. As always, I would definitely love people to raise their hands using the reaction button and start sharing their love with each one of us. So आज बस प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार. What a song. There is energy, there is a chemistry, there is, बस प्यार ही प्यार है बेशुमार, unlimited and unconditional. ये होता है प्यार. So let's see who is the first one to talk about his or her pyar. I think there is enough time for us to talk about it. बड़े प्यार से, इत्मीनान से शेयर कीजिए. And any of those moments that you recall, it has a major impact in your love life. बोलना चाहेंगे कोई? Yes, सत्यनारायण जी ने हाथ ऊपर किया है. So sure sir, सत्यनारायण जी, all the very best, and we have heard you speak the other day, and you are an inspiration for many of us for what you have achieved in life. So please go ahead, share. बहुत बढ़िया बात बताई आपने last time, right? For the last 40 years how you have been living, we all are aware of it. Thank you. Hats off to you for that. Thank you. You are able to hear my voice? Yes, we can. Yeah, fine. I can hear, I guess. Actually, as you said, the Valentine Day, I do not heard till my age of 50. Okay. I was 33. अब तो जब 30 में आपने सुना है, मैं तो 50 साल में सुना है व्हाट इज वैलेंटाइन डे करके. बट एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है, प्यार क्या है, सिर्फ उसका एक ही दिन रहता है, पावर तो 365 डेज होता है. इट इज 365 डेज, एज यू सेड, between a couple, between wife and husband, between brother sister, parents, children. So it is 365 days and it is infinity.
Absolutely. So that cannot be celebrated for only one day in the life. Okay. And the second thing, as you said, सी देर वहां तो नोक झोंक होती है, यहाँ दो दो एक के पर रहता है, दो तीन चार जो भी रहते हैं, वहां तो नोक झोंक होती है, ठीक है। अब नोक झोंक होती है तो इट इज बिटवीन द टू पर्संस कि हाउ दे आर गोइंग टू रिजॉल्व द थिंग्स। अभी कभी हस्बैंड चिल्ला रहा है तो वाइफ शांत हो जाती है, कभी वाइफ चिल्लाती है तो हस्बैंड शांत हो जाता है। अगर दोनों पैरेलली चिल्लाना चालू किया तो फिर वो महाभारत से भी ऊपर चला जाता है। So this is true facts of the life. तो एनी पार्ट, अभी जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, अभी एक हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, घर पे आ रहा है, थक के आ रहा है, शाम को जा रहा है, शाम को 6-7 बजे वापस आ रहा है, ठीक है। आने के बाद में जैसा बोलता है, अरे यार मैं थक के आ रहा हूँ, आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी। तो वाइफ से, अरे आप तो थक के आए, घर में सब कुछ अभी चाय पत्ती नहीं है, आप लास्ट टाइम में ग्रोसरी में लाना भूल गए चाय पत्ती, तो अभी आप जाके चाय पत्ती लेके आए, उसके बाद में आपको चाय मिलेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल्स, it is with everybody's human being. It is not the part of any individual persons. In general, I am telling. अरे यार चाय पत्ती का दो, आप जाके गुप्ता के किराने से चाय पत्ती का पैकेट लेकर आ जाओ। अभी जेप्टो आ जाता है, जेप्टो आके ऑनलाइन डिलीवर करके जाता है 10 मिनट में। अभी नहीं, ऑनलाइन में भी कम से कम 10 मिनट लगता है। 10 मिनट। अब बाजू में कोई ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप से जाके लेके आ जाओ, ठीक है। वेरी ट्रू। अब जब बोला बड़े मुश्किल से तैयार होता है, मतलब चेहरे को छोटा बड़ा कर करके वो रेडी होता है कि भाई ठीक है मैं चाय पत्ती लगा, मुझे चाय चाहिए, ठीक है। तो जब निकलना चालू करता है तो वाइफ बोलती है, अरे यार घर में थोड़ा सा शक्कर थोड़ा सा कम है तो उसको भी थोड़ा सा ज्यादा लेके आ जाओ, ठीक है। देन व्हेन ही गोस टू शॉप, घर से वाइफ फोन करती है, अरे घर में दूध है, थोड़ा सा आधा लीटर दूध भी एक्स्ट्रा लेके आ जाओ। सो इन द मीन टाइम दुकान में उसे कोई फ्रेंड्स मिल जाते, बात करते रहते हैं, तो ही ओनली परचेज द मिल्क एंड शुगर एंड फॉरगेट्स चाय पत्ती आ जाता है। तो एकदम घर में फ्यूरियस हो जाते हैं इसमें घर पे, बोले हमने चाय पत्ती भेजा, आपने खाली वो दूध और शक्कर लेके आ गया है, आप मेन थिंग तो लेके नहीं। अरे नहीं मैं भूल गया, फ्रेंड आ गया, अगेन दैट्स आर्ग्यूइंग स्टार्ट्स, ठीक है। अब ये बेचारा थका हुआ है, ये कैन नॉट आर्ग्यू का मिस्टेक ही है, तो चाय पत्ती लाना भूल गया था, बोले ठीक है अगेन आई विल गो बट आई डोंट वांट टी, मेरे को पहले हाथ पर जगह में खाना खाने दो, आई विल गो इन द नेक्स्ट टाइम। तो दिस आर द सिंपल थिंग्स वेयर द यहाँ से मेजर मतलब बढ़ते जाता है, धीरे धीरे अगर आर्ग्यूमेंट्स करते गया तो मेजर जाता है, रिजॉल्व करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए ऐसा है कि रिजॉल्व करना है तो वन आइदर हस्बैंड हैज टू बी कीप साइलेंट, सुनते जाने का है, या फिर वाइफ को साइलेंट रहने का, सुनते जाने का, देन ओनली द पीसफुल ऑफ द लाइफ जर्नी कैन बी कंप्लीटेड टू द डिजायर एक्सटेंशन। सो ये एक जनरल इन जनरल अनुभव, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल अनुभव, मैं किसी का अनुभव नहीं बोल रहा, ना मेरा अनुभव बता रहा हूँ, इट्स अ जनरल अनुभव। यहाँ पर आप बोल रहे हैं नोक झोंक होती है वाइफ एंड हस्बैंड, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, पेरेंट्स चिल्ड्रंस में भी ये होती है, कभी कभी चिल्ड्रंस बोलते हैं, आजकल तो सभी चिल्ड्रंस अब्रॉड चले गए, अभी हमारे घर में हम 2 ही है, ऑल माई चिल्ड्रंस आर वेंट अब्रॉड, ठीक है। अब जाने के बाद में ये होता है सैटरडे संडे फोन करते हैं, कभी कभी वो भी भूल जाते हैं सैटरडे संडे फोन करने में, पेरेंट्स है वो सोचते हैं अरे यार अभी सैटरडे संडे को फोन ही नहीं आया उनका, ठीक है। तो बाद में नेक्स्ट वीकेंड में ही फोन आता है, बोले यार लास्ट वीकेंड में आपने फोन ही नहीं किया, अरे आने के बाद में घर में सफाई कर रहा था, वैक्यूम लगा रहा था, फलाना लगा था, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा था, आई फॉरगेट दैट वन। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस में फिर से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, अरे यार वो चला गया, अभी मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा। So the arguments, it is not only between the husband and wife, the argument can be between parents and children also, between brothers and sisters also, between brothers and brothers also. तो any arguments with anybody, उसको एक ही है कि एक साइड का आदमी अगर थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, तो that matter can be easily resolved. And this is the peace of the life. लाइफ में अगर आपको फ्रीडम चाहिए, इफ यू वांट द हैप्पीनेस, तो एक जगह झुक गया तो यू कैन गेट द हैप्पीनेस। अगर दोनों अपने अपने लेवल में दिखाया, पेरेंट्स अपने लेवल में दिखाया, चिल्ड्रंस अपने लेवल में दिखाया,
वाइफ अपने लेवल में दिखाई है, हस्बैंड अपने लेवल में दिखाया है, तो पीस किसी को भी नहीं रहेगा। तो लाइफ में अगर नोक झोंक रहना है वही अच्छा है। बोलते हैं फूल है तो कांटे भी होते हैं, बिल्कुल कांटे के भी फूल में मतलब ये आता नहीं, मतलब सुंदरता आती नहीं है। फूल तोड़ने गया तो कांटे तो चुभते ही हैं। जी। तो दिस बोथ साइमल्टेनियसली गोस इन द लाइफ। नोक जो भी अच्छा है वो रहना पार्ट। अगर कंप्लीटली पैरेलल लाइन का एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन रह गया तो लाइफ इज जीरो। ईसीजी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है तो दैट मीन्स द मैन इज गॉन। तो लाइफ में नोक झोंक होना बहुत जरूरी है। लाइफ में हैप्पीनेस होना जरूरी है। लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होना भी बहुत जरूरी है टू मेंटेन द एम्बिग्यूटी इन द सिस्टम। दिस इज व्हाट आई वांट टू तो कन्वे। आपका बात बहुत सही है, बिकॉज अनलेस यू एक्सपीरियंस दुख यू कैनॉट एंजॉय सुख, कैनॉट एंजॉय। इट इज ऑल सेम। सो धूप वो छांव एक दोनों रहना बात बहुत है। जरूरी है। दूसरी बात ये है, व्हाट कम्स टू माय माइंड इज एम्पैथाइजिंग। या ये फर्ज करो कि एटलीस्ट आवर एज ग्रुप आई एम सेइंग, करेक्ट अब करेक्ट। करंट करंट एज ग्रुप के बारे में आई विल नॉट कमेंट। सही बात। आवर एज ग्रुप एटलीस्ट, लड़की ब्याह के से घर में आती है, शी इज अप्रोचिंग हरसेल्फ एंड कमिंग टू काइंड ऑफ अननोन प्लेस अभी बिकॉज। रिसेंटली जस्ट एक एग्जांपल आई एम जस्ट एग्जांपल क्या है, इट इज फैक्ट्स। अभी दिस सैटरडे संडे माय सन इज नॉट कॉल्ड मी। एवरी सैटरडे संडे बुलाता है। तो ये सैटरडे संडे में निकल गया था, बिकॉज इन द मीन टाइम ही हैज चेंज ओवर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन किया। अब मैं कुछ जैसा वो वर्टिगो चल रहा था तो आई वाज इन सर्टेन थॉट्स में कहीं चला गया था मैं, बिकॉज ऑफ माय वर्टिगो। तो आई केप्ट द मैसेज, अरे व्हाट इज हैपनिंग, हाउ आर यू, आई एम ओके, मैसेज आ गया। तो नेक्स्ट डे मेरे को जब उसने कॉल किया था फॉलोइंग डे, तो बोला यार मैं तो सैटरडे संडे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यू आर नॉट कॉल्ड मी। अरे पापा आपको मालूम है कि मैंने अभी चेंज ओवर किया है, हाउ मच टेंशन इज देयर, यहाँ पर चार्ज अनलोड करना है, यहाँ पर चार्ज लेना है नया ऑर्गेनाइजेशन में। आई वॉज केप्ट बिजिंग। और मैं इन्फेंट को, मेरा बच्चे को भी मैं संभाल रहा था, 3 मंथ्स 1.5 ईयर ओल्ड बच्चे को भी संभाल रहा था मैं। तो इस टाइप का जो एक विदाउट मीनिंग, जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, और यहाँ पर जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को अपन यहीं पर अपन दबा देते हैं, किसी के साथ में वो होता है, तो उसी दैट विल पे गिव द बेटर पीस ऑफ द माइंड टू एनीबॉडी। सही सही है। अगेन इट्स ऑल कम्युनिकेशन गैप होता है, या करेक्ट। इनएबिलिटी टू एम्पथाइज। अभी फॉर सही बात। एग्जांपल, एज आई वाज सेइंग, लड़की बेचारी सब छोड़ छाड़ के अपने मायके से आती है। राइट। हियर इफ यू आर नॉट गिविंग द सपोर्ट रिक्वायर्ड, इट विल बी वेरी टफ फॉर हर। हम तो हमारे अपने घर में ही हैं। yes, we also have to make an adjustment because a new member is coming, the rest of the करेक्ट। people नेचुरल too. नेचुरल but नेचुरल। but look at, if you see this example you gave, चाय पत्ती घर में नहीं है, you can yell, shout, इतना भी नहीं घर क्या संभालती हो, but then what is she going through during the day, you don't know. नेचुरल। That understanding we have to have, otherwise it's वन not हैज टू going to. अंडरस्टैंड, वन हैज टू अंडरस्टैंड Exactly. ईच So अदर। empathizing एक बहुत important aspect है in a relationship. So uh, love happens. So नहीं, we would also like to hear if there is any, I mean, बच्चे लोग बाहर हैं, एक हद के बाहर बच्चे लोग हमारे हाथ से निकल जाते हैं, तब we have no control over them. करेक्ट करेक्ट। So if no news is good news करके we have to start accepting life. Yes, it is. अभी कैसा मालूम है, एक जमाना ऐसा था जब हम लोग बच्चे थे, एक टेलीग्राम आया तो आदमी डर जाता है कि टेलीग्राम किसकी वजह से करके। किसकी वजह से है? Correct. नहीं, these are all. अभी हम लोग उसको कैसा किस वे में सोच रहे हैं कि भैया जब तक टेलीग्राम नहीं आया तो सोचना है कि बच्चे लोग दे आर हैप्पी। नहीं, currently जो with all these apps like WhatsApp and Facebook Messenger and all, one line we can always put, they can always put that okay, all okay, I'm tied up, don't worry about us, enough. नेचुरल कम्युनिकेशन शुड बी देयर, कम्युनिकेशन इज अ Yeah, मस्ट। maybe that expectation you can reset in such a situation. और कुछ इतना, it is वेरी not सिंपल, लाइफ इज एक्चुअली देखा जाए वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, पीपल correct, आर not मेकिंग at इट्स all. कॉम्प्लिकेशन। It's not a rocket science. Yes, it is an emotional science. Definitely, it needs to be इमोशनल managed with सेंटिमेंटल, इमोशनल gloves in सेंटिमेंटल। our hands. We have to manage it. ऐसा तो मुझे लगता है. दैट इज ट्रू, दैट इज Anyway, thanks Satyanarayan ji. We always like your thoughts. We have enjoyed your inputs थैंक यू। and appreciate it. थैंक यू सर, थैंक यू। Saroj ji, you're the next one who has raised your hand. That is somebody.
किसी ने हाथ नीचे कर दिया, संतोष जी ने. Sir, namaste everyone. Very namaste. Sir, I thought you will start with your love story first. ओह ओके. वो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ. ढूंढ रहा हूँ. What is it? Yeah, of course, love story, love has developed over. हमारे तो arranged marriage हुई है around 45 years ago. So we've been married. It was purely arranged by parents, and we saw लड़का लड़की को देखे मिले. ये सब मैंने बहुत लिखा हुआ है in public domain. Maybe I will have it shared once here also. But interesting story. We have had a wonderful life for 45 years. एंड अभी आदत हो गई है. लव कभी हुआ पता भी नहीं चला. ऐसा नहीं कि देर वॉज एज ए 24-year-old और 23-year-old आई फेल इन लव एंड वी गॉट मैरिड. ऐसा नहीं. एक प्रॉपरली अरेंज्ड मैरिज हुआ. टाइम लगा एक दूसरे को. विद इन 6 months जब प्रेग्नेंट हो गई थी बीवी को, ये भी लगा कि क्यों मैं यहाँ पे आई यार इतना जल्दी. ऑल दिस इट्स सच अ टफ लाइफ. अच्छे कंफर्ट, पेरेंट्स के कंफर्ट से लेके मेरे साथ अकेले एक जगह पे रहती है. नॉट इवन एनी माई पेरेंट्स ऑल्सो नॉट अराउंड, वी जस्ट टू ऑफ अस. It's not a great time, especially when the pregnancy is troubling you. So you're vomiting. There is a 24-year-old who also only understands that much. उसको भी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं है. So, those are the times which probably my wife would like to forget any time. भूल जाओ. But once the bundle of joy appeared, so then तो बस खुशी ही खुशी है. 9 months हो गए, फिर बच्ची आ गई है घर में, तो देन इट इज दिवाली. एक में गणेशा, एक में दिवाली. ऐसे 2 बच्चे हो गए हमारे 4 साल में. तो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग इन अ वेरी स्लो मैनर दैट ओके, ये हमारे हैं, हमारे अपने हैं. इट इज दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट गॉट जनरेटेड. एंड उस हिसाब से अभी कम सितंबर विल बी 45. So, and children are 43 and 40. So they are on their own, and grandchildren are there at 12 and a half and 7. So the unconditional love has gone to the next generation and the third generation. हमारा तो वी आर काइंड ऑफ टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड. एक दूसरे नोक जोक, अरे बहुत बढ़िया सा नोक जोक होता है. तो उनकी तो ऐसे ही किस्सा है कि उनकी जुबान चलती है तलवार की तरह और हम अदब से चुप है गुनहगार की तरह. ऐसे Good बोलते. one. दैट इज आवर स्टोरी जी. सरोज जी आप बताइए अपना. Sir, mine is a love marriage, intercaste love marriage. We always say that So there, anyone who falls in love and gets married or from his or her choice, वो लोग स्मार्ट हैं. हम में वो स्मार्टनेस नहीं थी. नहीं सर, ये it has both the sides. कुछ हो बोल नहीं सकता है. सकते. जो हुआ अपना नसीब है. That is our destiny, sir. So you must have seen in the colleges how the love story starts, with a fight, or the girl and the boy meeting. Like, All but that we my have seen in story is, movies only जी. कॉलेज तो हम कभी गए नहीं ना. हम मूवीज ही देखने oh, जा रहे थे. नहीं नहीं, मूवी तो बाद में तो देखे होगे, पर पहले मूवी नहीं देखी आपने शादी के पहले? नहीं नहीं, मूवीज ही देखता रहा. कॉलेज गए नहीं बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. So या गो mine अहेड. is a love marriage, intercaste love marriage. सो पिक्चर में जैसा दिखाते हैं ना, लड़का लड़की में जब पुस्तक गिर गई कॉलेज में या उठाए मेरे एंड दे महबूब वाला. फेल इन लव. पहले पहले झगड़ा हुआ, ये हुआ. तो हमारा भी पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन वो बुक वगैरह पे नहीं हुआ था. हमारा झगड़ा हुआ था ऑपरेशन थिएटर के ऊपर. वो डॉक्टर है क्योंकि ना. I was working in a hospital, and there I was there for quite many years. At least 5 years I was there. Then my would-be husband came from Kolhapur. He's outsider actually, and he studied in Jawaharlal Medical College in Belgaum. And after that, he came to Mumbai, where I was doing my job, and I was doing my house post. So whatever emergency comes, we have to see that
operation theater is empty, and like we get the operation theater in time, like whoever gets. So of course the list is there already, but emergency होगी तो कैसा अभी हमारा लेना है patient. So when I had to do cesarean for a fetal distress case, बच्चा अंदर ये हो रहा है, तो उसके लिए मुझे cesarean करना था, and I went to talk to the staff nurse. That time intercoms and all were not so many. It's the story of 1973. Ah, So, then my husband had also some emergency. He also wanted to take his case. That time he was a newcomer. He had just come to that hospital to work. And because he was a boy, the nurses, and they tend to, favor the boys as such. sure. So, but there was a fight, because his case was not that urgent as compared to my fetal distress thing. So there was a fight over this thing, because most of the operation theaters were booked. Only one was being emptied when a patient was taken out from the operation theater, and it had to be readied and all that. So what instruments they will keep is a question. So, but ultimately after that fight, I won the thing, because mine was a fetal distress case, because I had two lives to save. And Priority. so the thing started from there. That's the story. But after that, many hassles, and ultimately got married. When was Because your marriage? sorry, When was the marriage? marriage was in Mumbai, When? Date? 1976. 76. Okay. Yeah. So, but because it was intercaste, then there were other hassles, getting Understandable. married, but ultimately got married. It's a long So that, story. Many stories are there, but that's, I give chance to that someone else to speak. so the no joke was before marriage. What you said was, as professionals in the medical field, तभी Yes, था. yes, yes. So Yeah. घर में भी प्रोफेशन के बारे में आपका चर्चा होता होगा ना? हाँ, वो तो दिन भर चलता ही रहता है. Yeah, because both can understand that language. So Yeah, yeah, yeah. okay. लेकिन एक एग्जांपल नोक झोंक का होगा तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में. How it was नोक झोंक का settled. एग्जाम्पल ऐसा है कि एक बार when I was doing a post in Kalyan somewhere, and I used to have food in the doctor who was owning the hospital. It was a 40-bedded hospital. There all surgeries and everything was being done. But I used to have food in that doctor's house. But in my this thing self-contained room, I had small coil like a thing on which I used to make tea. क्योंकि मुझे हाँ, कभी भी चाय चाहिए, गरम चाय बना के, और whatever time I get up, I need tea in the morning. So sometimes कभी हमारे पसंद का कुछ बनाना है छोटा मोटा, तो हम वो कॉइल के ऊपर बनाते थे. It was a self-contained room, but the kitchen was up on the top floor, where the doctor whose hospital was there. They used to make nice food, and we used to go there. So my husband came with his friend. He was working in another hospital, and he came to meet me, and it was raining that day. And they both wanted to have bhajia. Now it was wow. so difficult to make bhajia on that coil thing. Coil. For that you need a flat So, base, right? sorry, You need a कांदा flat base भजिया. to. अच्छा, या अच्छा, बरसात के टाइम में कांदा भजिया एंड चाय दे वांटेड. क्या बात है. सो क्या किया कि ये बोले, अभी मैंने कहा मैं तो नहीं बना सकूंगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट हैव द थिंग्स. So he went up, the doctor's house, and he brought certain things. He brought oil and the kadai and all that. But whatever that बेसन का आटा ना भजिया के लिए जो लगता है, वो थोड़ा बहुत लाए, एक दो कांदा लाए.
अच्छा वो खाते खाते उनको इतना पसंद आ गया ना, तो बोलते और भजिया चाहिए। अब भजिया चाहिए तो कांदा कम पड़ गए। सो माय हस्बैंड वेंट आउट एंड ब्रॉट कांदा। अच्छा कांदा लाए तो वो सब कांदा काट के भजिया मिक्स कर रहे हैं, तो आटा कम पड़ गया। सो आटा कम पड़ गया, अभी क्या करेंगे? तो फिर आटा लेने गए, अभी इसी चक्कर में वो कर रहे हैं, और एक ही कॉइल है, तब तक चाय ठंडा हो गया है। सो अरे वी बाप स्टार्टेड फाइटिंग ऑन दैट, देन it was decided that I will leave this job and we will buy some house and stay together. great, great. Nice to know that. And the way you can, if both are not able to come to a conclusion, the best way is to say that let us agree to disagree and move on. Yeah, Let's not yeah. discuss the same topic again. Let's agree to disagree and खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो. Anyway, thanks, Yes. Sarojji. It was interesting to know. Others also who would like to speak about love, no joke, please use the reactions button and raise your hands. Right now, next to on the queue in the queue is Santosh Gargji. So, Santoshji, kindly unmute. Ah, नमस्कार सर। namaskar, namaskar. मैं एक छोटी सी अपनी की स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। Please do. सर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं तब 18 इयर्स की, मुझे ये सब नहीं मालूम था। मतलब 50 इयर्स तक, मतलब मैंने बेटी की शादी भी कर ली, बेटे की शादी भी कर ली, लेकिन हमें ये वैलेंटाइन डे कुछ नहीं मालूम था। हाँ, अभी ये तो मैं अपने हस्बैंड के, अभी तो मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो अभी फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही हम लोग बिग बाजार गए थे घर का ही सामान लेने के लिए। तो वहां पर बिग बाजार में मैं गई तो मुझे वहां इतना सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहा था। मतलब मैं एक दिन, शायद मुझे ध्यान नहीं है कि मैं 14 तारीख को ही गई या एक दो दिन पहले गई थी, ये अभी ध्यान नहीं है। तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर था, तो ये डेकोरेशन का आर्टिफिशियल फ्लावर बहुत सुंदर। तो मैंने कहा आज वो इतना सारा फ्लावर बिग बाजार में आया हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर। मैंने 2-3 जैसे घर में शो सजाने के लिए खरीद लिया और लेके हम आ गए। तभी मुझे नहीं मालूम था कि आज इसलिए आया है कि वैलेंटाइन डे है। मैं घर आए, मेरी डॉटर लो बोले अरे वाह माँ इतने सारे फ्लावर लेकर आई हैं, और बहुत हंसी। मैंने कहा पसंद आए तुमको? मैं फिर भी बोल रही हूँ, मैंने अच्छे है ना, देखो कितना मस्त इतना फ्लावर आया हुआ था। उसने फटाफट, मेरी डॉटर ने मेरी बेटी को फोन लगाया, बोले दीदी आपको कितने रोज मिले? तो मेरी बेटी ने बोला नहीं मुझे तो अभी तक एक भी नहीं मिला। कहती है दीदी मुझे भी एक भी नहीं मिला। और डैडी तो माँ को पूरा बंच दिलाकर ले आए। और इतना इतने बंच दिलाकर लाए डैडी तो माँ को। मैं फिर भी मैं उसकी जगह, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों इतना तुम लोग हंस रहे हो? कह रही है माँ आज ना वैलेंटाइन डे है अभी, और सब ऐसे फ्लावर दे रहे हैं, और आपको तो डैडी पहले ही दिला लाए। मुझे इतना शर्म भी आई, मैंने कहा मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। फिर सर मैंने नेक्स्ट ईयर, फिर तो मुझे ध्यान था। अच्छा फिर तो मुझे पता चल गया, मैं पूछती भी रही और से भी बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर में एक हफ्ते पहले से ही अपने, मेरे हस्बैंड बहुत इस मामले में मतलब बिजनेसमैन थे, तो इस मामले में ऐसे जो हंसी मजाक में उतना नहीं थे। तो मैं एक हफ्ते पहले से ही उनको याद दिलाने लगे। वो पता है उसने ये गिफ्ट दिया है उसको, उसको ये गिफ्ट मिला था, उसको ये गिफ्ट मिला था। पहले से मैं याद दिलाती रही। तो मेरे हस्बैंड ऐसे हंस के चुप हो जाते कि ठीक है होगा। फिर 14 तारीख आई, मैंने कहा आपने मुझे कुछ नहीं दिया, सब ऐसे गिफ्ट देते। तो कहते तो तुम्हें जो चाहिए तो वैसे ही ले लेते, ये सब कहने की मुझे तो नहीं समझ आया, ये सब लेने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, तुमको कोई मना ही है ले लेते। तो ये हमारा तो कभी कोई, हम तो इतने इनोसेंट थे ना, बिल्कुल कुछ ये पता ही नहीं था। हाँ सही बात है। हाँ ये जी, सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, बहुत मेरी बढ़ गया है पहले तो। 73 में शादी हो गई थी सर, तब मैं 18 इयर्स की थी। अभी तो 3 साल हो गए मेरे अच्छा, हस्बैंड नहीं है। पर वो हर बार हर साल मुझे वो सारी बातें बहुत याद आती है, बच्चों से भी हंसती हूँ
बच्चे भी हंसते, माँ ऐसे हुआ था ना, डैडी आपको इतने सारे रोज लेकर आए थे ना, ऐसे याद दिलाते हैं फिर। खुशी जी खुशी आपको रिकाउंट करना चाहिए इन बातों को, अच्छा जी लगेगा जी सबको। जी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं इस मामले में, मेरे को बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं होने देते, बहुत खुश रखते हैं। हाँ, अभी मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, मेरा बेटा एक दुबई में रहता है, एक यूएस में रहता है, बेटी यहाँ पर रहती है, मतलब दूसरे फ्लैट में, मैं अकेली रहती हूँ, पर फिर भी मुझे अकेलापन नहीं लगता। हाँ, जी आई थिंक इट्स अ गुड, बगल में कोई होना चाहिए, एक जी जी, लड़का या लड़की हाँ आसपास हो तो अच्छा है, जी जी, बात लेकिन करते नॉट हैं। ऑल हैव फॉर्च्यून, सो हाँ, एक ही कोई बात बिल्डिंग नहीं, में है जो है। वो फिफ्थ फ्लोर पर है, मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, एक ही बिल्डिंग में मेरी बेटी। अरे हाँ, और क्या तो चाहिए, बहुत ध्यान एकदम रखते सब हूँ, ऐसा। सपोर्ट हो जाता है ना, सपोर्ट स्ट्रक्चर इज इन प्लेस जी आपके लिए, तो जी जी, चलो अच्छा है, ये भी हाँ, बस सुनने में यही भी अच्छा छोटा, लगा। हाँ यही छोटा सा हाँ, है। हम्म, जैसे सत्यनारायण जी बोले, वाई ओनली वन डे ना, पूरा जिंदगी वी हैव टू सेलिब्रेट एंड बी इन लव, वाई ओनली ऑन 14th ऑफ February और द डे यू गॉट मैरिड, ऐसा वो दोस आर स्पेशल डेज, उसके लिए कुछ और करते हैं, बट यस, लव इज कंटिन्यूस, ऐसे समझना चाहिए। थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा जी लगा आपकी बात सुन के। जी एनीबडी, आई मीन शोभा जी ने हाथ ऊपर किया है, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आई वुड सजेस्ट यू कैन स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स बाय यूजिंग द रिएक्शन बटन। शोभा जी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए आपका तजुर्बा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ का ही एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। मेरे प्लीज। मेरे हस्बैंड कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो वो बहुत सीरियस थे। उनको सिर्फ बुक्स, स्टडी स्टडी और कुछ और नहीं, कभी शो नहीं करना कि प्यार शो नहीं करना, कोई हंसी मजाक नहीं, बहुत ही सीरियस इंसान थे। एक बार हम लोग ने जब अपना नया घर बनवाया तो हम फर्नीचर देने के लिए दिल्ली में कीर्ति नगर मार्केट है, मैं वहां गई उनके साथ। तब स्कूटर होता था, मैं स्कूटर पे गई, तो फर्नीचर देख के हम लोग निकले। और उन्होंने सोचा, बस एज्यूम कर लिया कि मैं बैठ गई पीछे और चल दिए। अब मैं जहाँ रहती थी वहां से कीर्ति नगर बहुत दूर था, उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कहाँ मुझे छोड़ के आ गए। उसके बाद मैंने वहां से फिर ऑटो किया, ऑटो करके मैं तो घर आ गई, क्योंकि कहाँ ढूंढती, कब तक वेट करती, मैं ऑटो करके घर आ गई। और इनको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ, ये घर आके देखा कि ये तो घर में बैठी, पीछे देखे है ही नहीं, अंदर आके देखे तो घर में बैठी है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एकदम चुप हो गई। मैंने कहा अगर मैं बोलूंगी तो और बात बढ़ जाएगी, मैं एकदम चुप कर गई, कुछ नहीं, मैंने जस्ट इग्नोर कर दिया। तो बोले तुम क्यों नहीं बैठी? मैंने कहा आपने देखा नहीं पीछे कि मैं इतने चला रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चला पूरे रास्ते? कहते सॉरी, पता नहीं मैं किस ख्याल में खोया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। उसके बाद बात थोड़ी देर के लिए, मतलब घर में जैसे शांति हो गई। तो ये कभी शो नहीं करते थे कि हाँ कोई प्यार शो करना है, कुछ करना है किसी के लिए। उस दिन क्या हुआ, 1 घंटे के बाद मार्केट से आए, मेरी पसंद की सारी चीजें लेके, जो भी मुझे पसंद था सब कुछ लेके आए, इवन और भी कपड़े भी लाए, खाने की भी लाए। मैंने और मतलब उनका एक जेस्चर था ये अपना गिल्टी को वो करने के लिए। तो उस वो जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा शायद मैं अगर रिएक्ट करती तो ये बात बढ़ती। जो इंसान कभी प्यार नहीं शो करता, तो उसने इतना बड़ा कुछ काम किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज तक वही मैं याद करके वही वो इजहार मोहब्बत है। उसको मैं आज भी याद करके खुश भी होती हूँ, खुशी के मारे आंसू भी आते हैं दिल में, क्योंकि अब वो नहीं है मेरे पास साथ। Okay, that is तो sad. हाँ, वो उनका एक जेस्चर था प्यार शो करने का, जो कि वर्बली वो कभी नहीं शो करते थे। हाँ, एक एक का स्टाइल है, हाँ, कोई सब कुछ कुछ ज्यादा ही ओपन होता है, कोई धीरे पब्लिक धीरे में भी समझ बहुत अफेक्शनेट हो जाते हैं, कोई कोई। धीरे धीरे समझ में आया कि बहुत लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो प्यार नहीं करते, लेकिन कई धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई, फिर तो होने लगे, एक्सप्रेसिव भी होने लगे। बस यही छोटी सी शेयर करना चाहती थी मैं। डिपेंडेंसी भी बढ़ता है ना उम्र के साथ। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जवानी में तो कोई ठीक है, चले मुझे भी चलते लगा हैं कि आगे। अगर मैं रिएक्ट करती, बोलती गुस्से में तुमने ये किया, तो बात बहुत बढ़ती फिर हमारी। तो मैंने कहा बेटर है कि मैं चुप रहती, चुप रह के रियलाइजेशन ज्यादा हुआ उनको।
नहीं नहीं, ऐसे बहुत किस्से होते हैं लाइफ में। कभी किसी को एक दूसरे के लिए इंतजार करना पड़ता है। हमारे मैं तो आईटी इंडस्ट्री में था, मेरे लिए तो बहुत सारे किस्से ऐसे हैं कि मैं बोल देता हूँ शाम को शादी में जाना है, तुम ऑफिस आ जाओ, ड्राइवर भेजता हूँ, आप लोग ऑफिस में आ जाओ, फिर हम लोग इकट्ठे चलेंगे। लेकिन मैं ऑफिस से बाहर निकल ही नहीं पाता हूँ, ये लोग आके बैठ जाते हैं रिसेप्शन में या मेरे कमरे में आ जाते हैं, देखा तो ये आदमी फंसा हुआ है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है, लेकिन झेला है, सबने झेला है बोल सकता हूँ मैं। यही लाइफ है, कभी हम चुप हो जाते, कभी वो चुप हो जाते। चलिए, ओके जी, बहुत अच्छे थैंक यू। जी भाई, थैंक यू। अभी कौन है, कोई हाथ ऊपर नहीं किया है, सो अभी मुझे चुनना पड़ेगा। तो आई विल सेलेक्ट, जो पहले दिख रही है मुझे, इस मनिंदर जी। तो मैं अनम्यूट करने की दरख्वास्त करूंगा आपसे। Hello, sir. वेरी गुड इवनिंग जी। Very good evening to all. बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है सबने, सरोज जी ने, सत्यनारायण जी ने, शोभा जी ने, और आपने सर बहुत अच्छा बोला। इंटरेस्टिंग, मजा आया सुन के। नोक झोंक में इसका पूरा सोचती हूँ। पूरा श्रेय इसका जाना चाहिए फिरोज को, ये टॉपिक वही बनाते हैं, हम लोग तो क्या है हाँ, क्योंकि थैंक यू एग्जीक्यूटिव। फिरोज जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया है। नोक झोंक में सोचती हूँ जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना तो लाइफ ऐसे लगेगी कि बहुत बोरिंग हो रही है। लैंड। हाँ, नोक झोंक हर रिश्ते में है। बचपन में बहन भाइयों में, फिर अपनी बचपन में अपने पेरेंट्स की नोक-झोंक भी हम देखते हैं। बड़े हुए कॉलेज में, उसके बाद शादी के बाद। तो ये जहाँ आप काम करते हो वहां भी होती है, आपकी वर्क प्लेस में भी होती है। बहुत तो ये बहुत हर होती है। जगह है, इसके बिना तो नहीं। हाँ, एंड इसका यही है एडजस्टमेंट। किसी भी रिश्ते में नोक-झोंक होती है, यू हैव टू एडजस्ट। अगर आप यस। एडजस्ट कर रहे हो, हाँ, हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक एडजस्ट कर रहे हैं तो इतने सालों साल हमारी लाइफ स्मूथ चलती है। अगर इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो पर्सनल नोक-झोंक के बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारी नई-नई शादी हुई। शादी के 2-3 डेज़ के बाद ही हैड टू मूव टू पुणे फॉर अ कोर्स, लॉन्ग कोर्स। तो मुझे भी साथ लेके जाना था। तो चलो हम लोग पहुँच गए पुणे। पुणे पहुँचे, पहले तो 2-3 डेज़ वी हैड डिनर इन आवर फूड ऑल इन आवर मेस, क्योंकि नई-नई शादी हुई, छोटी उम्र, खाना बनाना ये सब नहीं था। हमें अकोमोडेशंस देते हैं वहाँ, मैरिड अकोमोडेशन। तो 1 वीक के बाद वी वर सेटल्ड, हम सामान ले गए थे सारा। तो दे गिव अस क्वार्टर्स, तो वी सेटल्ड डाउन एंड स्टार्टेड कुकिंग स्लोली स्लोली। तो अभी 8-9 डेज़ हुए थे। एक रात क्या हुआ कि हमारे 12 बजे के बाद, आई थिंक इट वाज़ 1 o'clock, डोर नॉक हुआ। इन्होंने भी नहीं खोला, मेरे को थोड़ी-सी आवाज़ आई। आई सेड पता नहीं कोई जानवर होगा, इस समय रात को कौन होगा डोर पे। तो उसके बाद एक बार फिर हुआ, ये नहीं थे। फिर उसके बाद विंडो नॉक हुई, देन ही गॉट अप, भी कोई नॉक कर रहा है, मेरे को देखना है। बेडरूम की विंडो को नॉक किया। तो इन्होंने जाके दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, देयर वर 10 to 12 officers, some with the wives and other bachelors. They all came to our house. तो इन्होंने मेरे को जल्दी से उठाया। ही सेड कि मनिंदर यू गेट अप, ऐसे ना कोर्स मेट्स आ गए हैं, तो यू प्लीज कम। तो आई सेड इतनी रात को भी, कहते धीरे बोलो, प्लीज डू कम। मैंने कहा अब तो जाना पड़ेगा। एनी हाउ आई वेंट इनसाइड एंड दे सेड मैम गुड इवनिंग। मैंने कहा गुड इवनिंग मैम, वी हैव कम टू हैव डिनर विद यू। मैंने कहा डिनर विद मी एट दिस टाइम। मैं उस समय तो बोली नहीं, पर मैंने मन में सोचा ये कैसे फौजी हैं। हाँ, जो रात को 1 बजे मेरे को कह रहे हैं कि मैम हमने डिनर आपके साथ करना, हमने आज खाना नहीं कुछ खाया, एंड देयर आर सो मेनी पीपल, मेरे पास तो बर्तन भी नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं ना थोड़ी सी ना बड़ी हो गई, मतलब आंसू जैसे आंखों में आते हैं ना। ये मेरे से खाना मांग रहे हैं इस समय, और मेरे पास वो अरेंजमेंट्स भी नहीं थे। और लकीली हमने घर सेट किया था, मेरे पास एग का ट्रे था, चाय का सामान था, और आटा हम लाए हुए थे। They said, no, don't worry, ma'am, we will help you. I said, okay.
तो पहले तो सारे खूब हंसे, खूब मजाक हुआ। उसके बाद मेरे को किचन में जाना पड़ा। बैचलर्स मेरे साथ आ गए। उन बैचलर्स ने मिलके मेरे साथ आटा गूंदा। वाह, और मेरे पास उस सुपर। समय, यू कैन इमेजिन, आज से इतनी देर पहले हम लोग कोर्स पे गए हुए थे। मेरे पास वो गोल वाला हीटर होता है ना, खाना बनाने वाला, वो था। हाँ हाँ। उस पे हमने खा, गैस वैस नहीं था तब। एक हीटर पे अब आटा गूंदा गया। उस पे फिर ऑमलेट बनने शुरू हुए। फिर उस पे चाय बनी और इतने सारे लोग, आप सोचोगे नहीं। बट क्या हुआ, उन्होंने हमें तंग किया। तंग इसलिए किया कि दे आर न्यूली मैरिड, इनको हम तंग करेंगे। पर मैं तो गुस्सा हो गई अंदर से। मैं इतना गुस्सा हुई, मैं सोचती रहूंगी कैसे फौजी से शादी शादी हो गई है, जो रात को, इतनी रात को उठा रहे हैं लोग और आके कह रहे हैं कि हमें डिनर करवाओ। सो एनी हाउ सुबह के 4 बज गए इस चक्कर में। उन सब ने खूब खाया, खूब मजे से खाया, खूब इंजॉय किया। उस समय तो मेरे को गुस्सा लगा। लेकिन फिर सुबह हुई तो फिर हस्बैंड ने समझाया, नहीं गुस्सा नहीं करना, ये फौज का रिवाज है। देखना आज इन्होंने हमें तंग किया है ना, तो कल जिसकी नई नई शादी वाले यहाँ और बड़े लोग आए हुए हैं, हम भी नॉक करेंगे, तू उस समय खूब इंजॉय करेगी। तो बस अच्छा। ये मेरी फर्स्ट नोक-झोंक हुई, लेकिन मैं समझ गई। और वाक़ई ऐसे हुआ कि कुछ दिन बाद हम भी किसी और न्यूली मैरिड के घर गए। उनका हमने रात को 12:30 बजे डोर नॉक किया और यही सीन क्रिएट हुआ और बड़ा एन्जॉय। लेकिन इस इंसिडेंट को जब मैं आज याद करती हूँ ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है। अच्छा इस बात के लिए लगता है कि उन्होंने वो जो प्यार दिखाया और जो वो प्यार से परांठी और वो ऑमलेट खाया और चाय पीना, वो मेरे को आज भी नहीं भूलता। बड़ा वाह। मजा आया इस इंसिडेंट को। सो ये होता है, कई बार हम समझते नहीं है, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाद में सोचते हैं तो ये होता है कि नहीं, इन बातों पे गुस्सा करना नहीं चाहिए। बट ह्यूमन नेचर है ना, उस समय गुस्सा आ जाता है। तो ये प्यारी प्यारी वाली नोक-झोंक होनी चाहिए, जो कि हमेशा हाँ, याद रहती है। हाँ, भगवान ना करे कुछ सीरियसनेस ना हो। तो ये मैंने राइट राइट। एक अपना इंसिडेंट शेयर किया, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट चलो एक ही एब्सोल्युटली। इंसिडेंट मैंने शेयर किया है। बहुत बढ़िया ऐसा। मनिंदर जी, बहुत अच्छा लगा। और वैलेंटाइन डे का ऐसा है कि सर मेरे लिए एवरी डे इज ए वैलेंटाइन डे। मैं वाह वाह। वैलेंटाइन डे स्पेशल मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं करती अपने हस्बैंड से कि आप मेरे को फ्लावर्स दो, मेरे को ड्रेसेस लेके दो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग इकट्ठे कहीं बाहर चले गए, आउटिंग कर ली, कहीं खाना खा लिया, बस यही हमारा वैलेंटाइन डे होता है। एज स्पेशल कुछ नहीं है। So this was all for एनीवे today's एनीवे ऑफ सेलिब्रेशन इज दैट हर हर दिन वैलेंटाइंस डे है ना, आपने जैसे बोला या कि देयर इज बस ऑन हर दैट दिन डे। वैलेंटाइन डे है। या ऐसा वंडरफुल। कुछ नहीं मेरे मन में। थैंक यू। थैंक यू मनिंदर जी। सरोज जी ने हाथ ऊपर किया है, तो दोबारा पूछ लूं क्या है, कुछ और बताना है उनको? सर क्योंकि कोई किसी का हाथ ऊपर नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं ही बोलती हूँ तो दूसरे अदर पीपल विल बी encouraged टू टॉक या इफ नो एनीवे आई एनीबॉडी। एम गोइंग, आई विल गो। मेरे स्क्रीन में जो दिखते हैं उनको एक एक करके मैं उनके पास जाऊंगा ही। ओके सर। ये जब हम हॉस्पिटल में थे और हमारे क्या बोलते हैं लव स्टोरी अभी स्टार्ट हुई थी। वो झगड़े वगड़े हो गए जब ऑपरेशन थिएटर में वो रोज के किस्से हो रहे थे। उसके बाद ऐसे लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग कई बार साथ में होते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड साथ में होते हैं, हम लोग कैंटीन में होते हैं तो भी साथ में होते हैं, मेस में जाते हैं तो भी साथ में होते हैं और इवनिंग टाइम आल्सो वी आर टुगेदर तो जो दूसरे हमारे कलीग्स थे वो सब सोच रहे थे कि अभी इनका क्या कुछ अफेयर चल रहा है कि क्या चल रहा है। अब कैसा वो लोग पता करेंगे ना, हम लोग तो बताने वाले नहीं है ना। हम किसी को क्या बताइए, हाँ हम लोग मोहब्बत करते हैं ऐसा तो नहीं बता सकते ना। पर पीपल स्टार्ट गेसिंग क्या कुछ चल रहा है करके। दाल में तो कुछ है काला ना है। हर महीने में एक बार है ना जो हॉस्पिटल का टेरेस है वहां पे ऐसे ही सब लोग मिलते थे और पार्टी जैसा करते थे। सो देन टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट दैट वी आर हैविंग अफेयर, सो दे अरेंज अ गेम, डॉग एंड द बोन गेम होता है ना। हाँ हाँ हाँ। डॉग एंड द बोन, इससे दो पार्टीज होती है, बीच में वो कुछ रुमाल रखते हैं, फिर वो एक एक जाएगा और फिर उसके ऊपर जैसे झगड़े हो गए तो वो जो आउट होता है ना उसमें फिर बाद में उसको पनिशमेंट देते हैं। तो दे गेव अस एक एक ग्लास में उन लोगों ने कोक दिया। उस समय कोक वाज समथिंग न्यू एट दैट टाइम।
Coke with 2 straws they give, and they wanted to see if we are drinking, like हर एक शादी में पीते हैं ना, एक ही ग्लास में से 2 husband wife Big 2 one. straw में से, Those तो they straws. wanted to see, हाँ ये लोग पी रहे हैं कि नहीं, अगर पिएंगे तो हाँ कुछ affair है. That is what their idea was. So in that punishment they gave us Coke with 2 straws to drink. हमने तो we happily had it. So that is the thing, how it came out, and everyone started knowing about our affair. फिर जब हमारी शादी हुई तो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ, जो आयाज एंड वार्ड बॉयज, even the dean of the hospital, everybody wanted to see because it was intercaste marriage, and like, so it was full of hospital people, marriage reception. That is one of the Wonderful, thing. wonderful. चलिए, बहुत अच्छे. So I'll now move to Jayaprasad ji. Jaya ji, please unmute. Yes, Jaya ji, go ahead. Hello, sir. Good evening, sir. Hey, good evening. I have nothing to say about the Valentine's Day, sir. Ours was an arranged marriage. So, and before the marriage, totally, I was also engaged in job, and from the young age only I started my career. I worked for a company for 7.5 years in Pune. And side by side, I completed my studies also. So, and got my younger sister married first. And after that, I joined the bank in 1982. Then after my sister's marriage, they started looking for my match. And luckily, my husband happened to be my sister-in-law, my brother's wife, and my mother-in-law. They both are sisters. So in the relation only, we got married, and till now, every day is a Valentine's Day for us. So we don't have any special Valentine or anything. So You don't have any arguments, any fights between the two of you. Very peaceful life, smooth. Yeah, smooth. All. Then it is dull. Then it is dull. So there has to be some. No, it's not dull, sir. There will be. While going to office, each one going to office, starting for office, packing the dabba, then getting late. When the vehicle comes and waits here, those things are bound to be there everywhere. So that is. So what is the cutest thing he did for you? Cutest thing means when I was in the bank, I applied for a CIB exam. Okay. So for that, I used to attend one accountancy class, special class. That is after the office, I used to go there. At that time, my children used to be very small, 2 years and 4 years, like that. So I used to go from the office to class. So by the time the class finish, it will be 8:30. So after he comes from office, he used to take the children. He comes and wait in front of the class. There used to be one park over there. One Godgill class was there in Pune. So he used to take the children in that park and make them play and all. Exactly, he used to pick me after the class is over. Okay. So he used to wait for so long, but he never gets tired. Whenever I am late from office, he comes to pick up. That is all. He takes it as his responsibility, and that's wonderful to know that. Nice. Good. So Prasad ji has taken care of you very well, I suppose. Yeah.
like that, and you folks be like that all So through. that 39 years we have completed. 39. Okay, wonderful. Okay, thank you so much, Jayaji. Thank you, sir. Uh, now it's the turn of my very good friend who is called Natkat Balak, Mr. Suresh Nanda. Suresh Nanda जी, नटखट बालक अनम्यूट करिए. Sure. अपने वाक्यान. Good evening. गुड इवनिंग, बयान कीजिए. मेरा नोकझोंक तो my day starts with नोकझोंक, ends with a नोकझोंक. कौन सी नई बात है? It's part of life, sir. That's why I am happy and free from blood pressure, diabetes, and all these things by grace of Almighty. Yeah, this is it. So far, what you say, Valentine Day? It was in past. There are so many anecdotes, so it's difficult to recollect all. I have forgotten those things. अरे प्यार की बात है, ऐसे भूलना नहीं चाहिए ना. आप तो शर्मा रहे हो. यू आर फीलिंग वेरी शाय. वो सब इतना ये नहीं रखता सर मेरे लिए. मैं आई live on the present. Past में किसके साथ you went to dinner, lunch, वो सब those there are so many things, but I don't think we have to recollect all those pleasantries and feel happy because every moment I enjoy. So that is the ideal way of life, to enjoy every moment, live with this moment and all. Yeah. But we are, जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन is it really practical? हमको तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता है ना. Whenever it comes, you will either think about future or think of past. कुछ ना कुछ some अच्छे चीज भी तो होते हैं, ऐसे बोलने लायक तो नहीं है. भूल गए वो नगमे प्यारे शोर भरी शहनाई में, चाह नहीं महफिल में क्यों, खुश हूं मैं तन्हाई में. ये बात नहीं है. 1960 में आप पैदा हुए हो. Yeah. अभी at the age of 64 आप अभी भी you can fall in love. It's never too late. Yeah. Love never dies. हाँ. तो एक तो किस्सा बताइए अपने कॉलेज लाइफ का. आप क्या रंग रलियां थी यार. मैं ज्ञान शुक्ला के पास चला जाऊंगा. सर उस टाइम तो था क्या, 80s में used to give what कैसेट होता है ना, HMV का ना, सोनी या HMV 60 रुपया में आता है वो. या तो और क्या है, आर्किस का प्रचलन इतना नहीं था शायद उस वक्त. आर्किस का जो फैंसी आइटम्स एंड कलरफुल and very elegantly written cards and all these things, वो दिया करते थे सर. बस इतना खास नहीं है. बहुत सारा गिफ्ट किए भाभी जी को. भाभी जी को क्या पहले हंसिए. सुनिए, दोस्तों को दिया, भाभी जी को दिया नहीं मुझे याद नहीं है. भाभी जी से पता करना पड़ेगा ये. हाँ, उनसे पता कीजिए. शी वुड स्पीक द ट्रूथ. दोस्तों को दिया बहुत में. बुलाइए उनको. शी हैज गॉन टू स्कूल सर. ये तो आप हमारे खींच रहे हो अभी. नहीं सर. शी गोज टू गुड़गांव. शी कम्स अराउंड 8:30 to 9. तो आप खाना वाना बना के तैयार रखते हो सर उनके लिए? हाँ जी, उनके लिए सब कुछ तैयार रखते हो खाना वाना बना के? मैं I whatever ये capacity I have, I kept it because I am a jolly robber, so मैंने सब कर देता हूँ. Even on 19th January she had a cataract operation at AIMS. So उन्होंने, we are waiting for the cab to fetch us. So he was wearing a black specs and wearing a black dress. तो मैंने गुनगुनाना शुरू किया, वो तेरा काला चश्मा. Then she was furious. यार तू कभी भी जीवन में सीरियस नहीं होता है. Always बोला यार देखो सीरियस होके क्या मैं बीपी का दवाई खाऊं क्या? तो I am like that.
सही है, यू बी हाँ, योरसेल्फ। या इतना आर्टिफिशियली तुम चेंज हो गए यार, वैसे एडजस्ट तो किया इतने साल तो। adjust because I adjusted with her, she adjusted with me, so we बस raised our children, बस fine, और क्या चाहिए? There लाइफ are इज फुल ऑफ secret, सुनिए एडजस्टमेंट। सर, there are secret tragedies in every heart. ट्रू ट्रू। उसको ये सब करने के लिए जैसे प्रेजेंट होता है, यू एंजॉय एंड बी पैशनेट अबाउट लाइफ। एक्सलेंट एक्सलेंट मैसेज सुरेश जी, मजा आ गया सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सरोज जी has a lot to say, so in installment she is doing it. Go ahead. Sorry. No, because no one is raising hands, sir. I am just. Yeah, अभी सबसे I just पूरा for me the definition of love. What is the definition of love? Anyone can, of course, as he said, Suresh Nanda, it is ever there. It's evergreen. The love is evergreen. Love is actually the elixir of our life. लव के बिना कुछ नहीं, ये एक अमृत है। लव के बगैर ये जिंदगी कुछ नहीं है ना। तो लव इज लिविंग ओवरवेलमिंगली। एल, लव का एल इज अच्छा लिविंग overwhelmingly with vibes and emotions. Oh wow, vibes and emotions, lovely. O is overwhelming, V is vibes, Vibes. and E is for emotions. So, love can be of any type, as you said, like it is not only romantic love, it can be with mother, father, with siblings, Every, or every. your pet dog, or even your hobbies. Love for nature, love can be of anything. Without love, there is nothing. Actually, this whole world is revolving under love. No, सो another thing अभी about, जो वैलेंटाइन का बात हो रहा है, तो वैलेंटाइन पहले तो एक ही दिन होता था, फिर एक ही अभी तो दिन सेलिब्रेट किया जाता था 14 फरवरी को। पर आजकल का जो जनरेशन है ना, वो पूरा एक हफ्ता सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 वीक इज वैलेंटाइन वीक, और हाँ उसमें वैलेंटाइन अलग अलग दिन होते हैं। एक होता है रोज डे। हाँ रोज डे में भी लोग काउंट करते हैं कि आपको कौन सा रोज मिलता है। रेड रोज इज फॉर योर लव and yellow rose is for the फ्रेंडशिप, friendship. या Yeah. so all those So, younger generation used to do that. sorry. या बच्चे लोग ऐसे करते हैं, आई हैव आल्सो सीन, आई हैव बीन आल्सो अ रेसिपिएंट। कभी कभी Yeah. दफ्तर में मिल जाता था, येलो रोज मिल जाता था फ्रॉम पीपल। Uh-huh. लाल So गुलाब नहीं देते। yellow rose is only for friendship, दैट्स not for राइट, love. वही Okay, मिलता love था। के लिए red rose ही है। और there is after that rose day, there is propose day. Then there is teddy day. Teddy bear gift करेंगे तो teddy day. Then then there is hug day. Then there is a kiss day. वाह, किस और कितने ऐसा होते हैं। 7 days है। सो फिर वी नो वो ओनली फ्रेंडशिप बैंड वगैरह भी बांधते हैं कभी, आई रिमेम्बर वो भी कुछ दैट था इज फ्रेंडशिप डिफरेंट सर, दैट इज फ्रेंडशिप डे अलग होता है। अलग होता है। आई थिंक देयर इज इट कम्स, आई थिंक आवर सीनियर he must be knowing Firoz. क्या He is फिरोज he विल is नो the youngest एवरीथिंग। one. अभी पूरा हफ्ता, दिस फुल वीक इज सेलिब्रेटिंग विद एवरीवन नो, इन एवरी प्रोग्राम। Celebrating. Yeah. And now I remember my first gift on the Valentine Day, that is 14 February. That was just about 6 days before my marriage day. My marriage day is 20th February, 20th February. So my first gift was not red rose, but I got a color box of bindis, ये इधर बिंदी लगाते हैं ना। सो दैट अच्छा, टाइम वाज, अभी आजकल वो टिकली लगाते हैं, वो प्लास्टिक का ऐसा चिपकाते हैं, वैसा नहीं। और ये कुमकुम आपने लगाया, ऐसा नहीं। वो कलर लिक्विड आता था उस समय, ऐसे छोटे छोटे बॉटल, ऐसा राउंड बॉक्स आता था। सो दैट इज व्हाट आई गॉट फॉर द फर्स्ट वैलेंटाइन डे। वाओ, ओके, इफ आई रिमेम्बर एनीथिंग आई विल टॉक अगेन सर। श्योर श्योर, लेट मी गिव अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स। ज्ञान शुक्ला जी यस हाथ यस ऊपर यस। किए हैं। ज्ञान जी, ज्ञान थोड़ा सर। ज्ञान बांटिए हमारे साथ प्यार के बारे में।
जब जवान थे तो वैलेंटाइन डे नहीं था। अब का जवानी क्या कहाँ भागी है? है? जवानी अभी भी है आप में। अब है तो जब शुरू से नहीं चल रहा तो वैलेंटाइन डे तो सब वैसे ही है। असल में हमारे बड़े भाई जो हमसे हैं उनका बर्थडे भी 14 फरवरी को होता है, और ओह, मेरा एक नाती है उसका भी बर्थडे 14 फरवरी को होता है। दो सेलिब्रेशन तो पहले से ही है। बनता है। तो वैलेंटाइन डे जैसा कुछ बचता नहीं है बाकी। बट वैलेंटाइन डे में आपका नोक झोंक होता है? नोक झोंक तो डेली अक्सर हो जाता है। वो तो वैलेंटाइन डे का उसके लिए कोई डेट निश्चित थोड़े है। सब दिन हो सकता है। असल में मेरी वाइफ भी सर्विस में थी, तो जब तक ये सर्विस में नहीं तब तक मैं भी सर्विस में था, ये भी थी। तो सुबह 5 बजे से रूटीन शुरू होती थी, और ये तो खैर स्कूल से कॉलेज से आ जाती थी अपना 2:30-3 बजे। मैं 6-7 बजे के बाद अक्सर रिहर्सल वगैरह में चला जाता नाटक के, तो 8-9 बजे तक लौटता था। तो खाना खा के बस, मतलब कोई ज्यादा बातचीत ही नहीं होती थी। तो अब जब हाँ, रिटायरमेंट के बाद वो पूरा कसर पूरी हो रही है। तो अच्छा है, लाइफ कंटिन्यूस। तो वो अभी तो वो पूरा सब वक्त नोक ही झोंक, वक्त है। पर नोक झोंक इतनी ना हो कि इलास्टिक लिमिट के बाहर चली जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाती हाँ, वो तो सही बात है। है। नहीं नहीं, इवन एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। बहुत ज्यादा प्यार भी हाँ, अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही तो बात वो नोक झोंक, है। एनीथिंग। हाँ, चलिए, कोई थैंक इसका यू ज्ञान जी। अगर आपको ये थैंक। टिप्पणियां हैं तो बताइए, हम लोग अभी भी सीखने के लिए तैयार हैं। कोई टिप्पणी ऐसी नहीं है खास। चलिए, थैंक यू सो मच ज्ञान जी, थैंक यू सो मच। सब कुछ इंटरेस्टिंग है आज। सबके मुंह में चेहरे पे मैं हंसी देखता हूँ, अच्छा लगता है। अभी मेरे नेक्स्ट एजेंडा और नेक्स्ट बॉक्स इज रमा गोपाल कृष्णन जी। बताइए प्लीज, नमस्कार। एयर योर। नमस्कार नमस्कार। सुन पा रहे हो क्या? यू आर एबल टू हियर मी? यस यस यस, वी कैन Okay. हियर यू वेल। So I should say, younger days they were filled with fun, chasing extracurricular activities, education, this, that, anything, you know. Then ours was an arranged marriage. We trusted our elders to pick the right person for us. So we didn't even speak until the marriage day. Even We are in the engagement, same I level. didn't. Yeah, engagement also, I didn't go. All members of the family went to his house, but I was not. I didn't go. And then I'm very fond of music, especially singing. So I was expecting after there is a small function during the marriage, Nelangal. Nelangan. They That is asked me to replaced by Sangeet now, na? कुछ थोड़ा फन रहता, सब लोग बैठते हैं, Yes. हम दोनों को, I mean, the couple should get familiarized with each other, so they have small games like somebody also mentioned. So one of then they asked him to sing. He said, no, I can't even. Then they asked me to sing. फटाफट मैंने गा लिया. And कौन सा he गाना गाया आपने? बोले रे पपीहरा. It was it was very the popular song at that time. So Yes. I sang that, and we are all South Indians. Nobody even commented, "Arey, अच्छा है," something, nothing. They just listened. So I got upset. So he didn't encourage And you. then I was like, no, not encourage.
encourage की तो बात ही नहीं है, हम लोग खुद सेल्फ एनकरेज हैं, हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड की तरह हम लोग सेल्फ वी आर ड्राइवर्स नॉट देन कुछ ना कुछ होता है ना, कोई नहीं बोला तो एंड देन लेटर ऑन आई फाउंड दैट men are from Mars and women are from Venus, because men, they keep their emotions under control. You can't expect them to tell everything and oh this that, it looks artificial. Probably we women are very emotional and we expect that our men, they praise us, we like that thing. Later on, as time went by, I said, you never asked me to sing. Not even once has he asked me, even now, till date, he never asked me to sing anything. But he shows his special concern, or he will in radio में जो मुझे पसंद है वही गाने वो लगाते हैं. I mean, he will he puts music very near me, and I'll be doing some work. Suddenly, Lata Mangeshkar is singing, somebody is singing. I'll just see he would have put music for me, just the songs that I like. So, those are subtle ways we have to understand, and we should respect that they show their, appreciation or whatever. When I take up something, he doesn't object to it. That itself is something very big. Why you want to do all this? Quilting. What do you gain by quilting? Cutting up material and then stitching it together. So many houses, they joke like this and hurt each other. But here at home, I and he are very, I say, okay, I'm busy with my work, and he also is doing something on his own. We are past this, because once I get angry, I don't talk for 5-6 days. Oh, that's very harsh. 5-6 days in the beginning. 5-6 days. And he would be like, he'll be struggling to open up the conversation. I realized it quite late how hurtful it can be to the other person if, we remain like this. And then he'll say, are you angry? Are you upset? I'm sorry if I have said. He would not even remember what is it that upset me. छोटी बात होगी, लेकिन I would get upset and अरे रिवील करने से ही पता चलेगा उसको कि मैंने क्यों गुस्सा है मुझ में. Then that thing, we overcame with time. We overcome all these things. It appears to be childish now to me. अरे क्या बात है? Even he may get angry and may not speak to me for 5 days. How hurtful it would be, but he has never done that to me. Never done that to me. So those are the pointers that he does care for me. I have to understand. He never remembers Valentine की बात छोड़ो, रोज देने का छोड़ो, yellow या red कुछ भी नहीं. He never even remembers his own birthday, nor mine, nor anybody's. He's like that. So I just pass. जो भी है आज का जिंदगी, whatever I can take out of today, I do it. I don't expect him to fall in love, him to encourage me, him to do something for me. No, I'm very self-contained person. I did with so many experiences in the past. I'm satisfied and I'm very happy within myself with the things that I do. It gives me joy. Somebody need not give me joy. I do things which I enjoy. So every day is a Valentine's Day for me. So nice. Yes. Everything boils down to expectation management as well. Yes, yes. Why should we expect anything from others if you are dependent on others to make you happy? I don't think you are leading a happy and contented life. Yeah, अगर मिल गया happiness, कोई बात नहीं है. We are happy. We are happy to be happy.
but you can't lay down a condition that no, my husband should remember my birthday. You should get me one sari, one necklace. Nothing. I'm happy. Yeah, I think small gestures are also very, very Yes, strong that is what. triggers. Peace. And one more thing is, in life, if there is peace at home, that is what is the ultimate. रोज का झगड़ा, यहाँ क्यों तुम ऐसा बैठे हो, क्यों उधर खड़े हो, इससे क्यों बात किया. We are seeing so many couples even in 80s doing this kind of thing. अरे वो सब देख के हमारा कंपैरिजन में हम बहुत खुश हैं, पीसफुल है, नो साउंड, नो स्कोल्डिंग, नो big वॉइस फाइटिंग, नथिंग. It's so nice and peaceful at home. That is what is the ultimate. It will give you a good feeling, and probably that's the reason for our good health also, mental as well as physical health. I think when there is peace within, you have no inhibitions, and you may even end up smiling at an unknown face and feel good about it. I do. I never have that that he's a stranger, she's a stranger. No, I can get talking. I am a people's person. That's a great feeling, actually, when you are at that stage. I mean, there are at some stages, some pockets, it has happened to me also. I used to get annoyed with people at one point, when I was in the US sometime in 91, 92, and it was very plastic from their end, whether you know the person or not, they will smile. And they will also ask you, how you doing? So, like, as an individual, all by myself, I'm not doing well. I want to tell somebody, but he has no time to listen to you. But then he's very mechanical. Like, what I learned was that you don't have to have that inhibition to say hello to somebody unknown or smile at someone. But then also, as I realized, and as we grew up, and then we started feeling well within ourselves at peace, रास्ते में जाओ, किसी के साथ मुस्कुराओ, किसी से भी बात करो, exactly like how Rajesh Khanna did with Murli. What was the name of Johnny Walker in Anand? Murli Manohar or something like that. You'll just go and talk to anybody, and then it's a vibe. So they just go talk. So he plays along well, but the other two people don't. So, but it's okay. That particular conversation failed. So क्या अब कितना ही बुरा हुआ, मैक्सिमम क्या होगा, फेल होगा. That way if you take, बढ़िया है जी. Thank you so much, Rama ji. Very, very enlightening, as always. Thank you. Now I move to Raman sir. Raman sir, normally you are very proactive when it comes to sharing things. So today we have been a little quiet. Is he around? Raman sir? I think Raman sir must be tied up, I guess. So can I look at Darbari Khanuja? Darbari Khanuja ji, can you unmute and also, if possible, switch on your video camera? हाँ जी बोलिए. हाँ, कैसे हैं जनाब? बस ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं? भाई एकदम प्यार ही प्यार, बेशुमार, बोलिए. हाँ, और मैं सब सुन रहा था, क्या हो रहा है. बस अभी अपनी प्यारी प्यारी बातें कर दीजिए आप भी, हमको अच्छा लगेगा. मैंने कहा था ये वैलेंटाइन डे सिर्फ एक दिन थोड़ी होता है, प्यार तो रोज करने की चीज है. ये थोड़ी कि आज वैलेंटाइन डे आज ही करना है प्यार. हर पल करो, हर दिन करो, हर वक्त करो, लगातार करो. ये सब मुझे अजीब चोचले लगते हैं कि ये डे वो डे. इसका मतलब खाली वैलेंटाइन डे छोड़ के और किसी दिन प्यार नहीं करना चाहिए. ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है. जो मदर्स डे भी इधर साल में एक बार आता है उनको, मदर्स डे. तो मदर तो हमेशा साथ में है. अरे हर दिन प्यार का दिन है. आप बताइए, आपका कोई प्यारा प्यारा किस्सा या प्यारा प्यारा नोक झोंक बताइए. कुछ हुआ आपके साथ जिंदगी में, बयान कीजिए, मजा आ जाएगा सबको. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है, तो इससे ऐसा कोई किस्सा नहीं है. यानी प्यार बाद में हुआ, शादी पहले हुई, प्यार बाद में हुआ. हाँ, प्यार बाद में. आप अपना किस्सा सुनाइए. अरे हम तो बहुत सुना चुके हैं अभी तक. अच्छा, हमने लेट करा, मैं भूल गया था कि 6:45 मुझे ख्याल आया कि प्रोग्राम है कुछ, तो देखा सबका सुनने लगा कि देखो क्या हो रहा है. नहीं एक्चुअली जो बोले ना, छोटे छोटे किस्से और छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं,
वो बड़े अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से. It need not be an expensive gift. Why do you have to give a diamond necklace? अगर आप ऑफिस से घर आते आते वो फूल वाले से एक गजरा का एक ये लेके गए घर में फूल, वो भी खुश कर देती है ना किसी के रेसिपिएंट को. छोटी छोटी खुशियां हमारे जीवन में बहुत हैं, लेकिन लोग वो लोग उसकी कदर नहीं करते. लोग खाली बड़ी खुशियों के इंतजार में रहते हैं बस. कदर करेंगे जी. आप सी वो भी उनका भी मेच्योरिटी आता है ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जब भी वो लोग उसका एक्सपेक्ट नहीं करते रहते हैं और आप कर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है उनको. एक तो मेरे लाइफ में ऐसे हुआ है कि मैं जब तक ट्रेन में सफर करता था बॉम्बे में, मैं बीच में मेरे घर का स्टॉप कांदिवली था, उधर उतर के स्टेशन के बाहर आऊं तो एक फूल वाला रहता था, मुझे देख के वो बांध के दे देता था. तो फिर मैं घर ले जाके दे देता. बीवी और बेटियां दोनों लगाते थे, खुश होते थे. ये क्या है कि ये रेगुलर थिंग हो गया ऐसे, जो वेदर यू लाइक इट और नॉट. उसके हाथ में 10 रुपया थमाए, वो दे दिया, हम ले चले घर में. रूटीन. तो अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था, रेसिपिएंट दोनों को अच्छा लगता, बेटी को भी अच्छा लगता था, बीवी को भी अच्छा लगता था. देन उसके बाद थोड़ा कुछ तब्दीली आई तो अभी कार में जाने लगे, बंद हो गया. क्योंकि रास्ता आधा अलग सा था, वहां पे फूल वाले दिखाई नहीं दिया. तो ऐसा भी होता है, वो भी एक्सेप्ट हुआ लाइफ में. तो ऑल आर. लेकिन क्या है कि कुछ कुछ था, वो लोग गिफ्ट के लिए इतने ये नहीं रहते कि दे नीड टाइम. हमारे टाइम वर्किंग डेज में तो 15-15 16-16 घंटा मैं बाहर रहता था ऑफिस से, घर से बाहर रहता था. तो वक्त आता था तो सिर्फ घर आना, डिनर लेना और सोना, इतना ही था, हो जाता. तो क्वालिटी टाइम नहीं मिलता था. ये नॉर्मल है, जायज है. बट द गुड थिंग इज, जब मैं छुट्टी पे रहता था, इट वाज कंप्लीट टोटल क्वालिटी टाइम. और छुट्टी में लेता था थर्सडेज को, क्योंकि बच्चों को थर्सडे छुट्टी रहता था. तो यू कैन गिव क्वालिटी टाइम. स्कूल नहीं है तो हम लोग सब साथ में रहते हैं चारों घर में, सो प्लेजरेबल मोमेंट्स. हम वो जो आप बार बार सोच के अच्छा लगता है, जो वी थिंक एंड रीलिव दोस मोमेंट्स. अभी भी वीकेंड में मैं अपने बेटी के घर में था. वी वर टॉकिंग सो मच अबाउट द स्कूल डेज. बचपन में उनका सैटरडे वर्किंग था स्कूल, मुझे सैटरडे ऑफ था. तो अगर मैं कैजुअल भी लेता तो मैं थर्सडे को लेता था, सो दैट आई कैन बी विद द चिल्ड्रन. अब संडे भी हो गया तो खाना खाना लेके मैं ले जाता था उनके लिए. वो लोग, वो भी दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू बापू आएंगे. सो दीस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट दे हैव एन लास्टिंग इम्पैक्ट. क्योंकि अभी बच्चे भी बड़े हो गए हैं हमारे, तो बट स्टिल दे रिमेम्बर. व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इट गिव्स ए. उसके लिए नशा का, दारू का जरूरत नहीं है, ये नशा अलग है. सही बात. तो वैसे नोक जोक तो होते रहते हैं अभी. वो सब तो चलते रहता है. हाँ, बट क्या है कि ज्यादातर हम लोग जितना हो सके अपना ही दांत है, अपना होठ है, चुप रहने में ही भलाई है. सही बात. चलिए, थैंक यू दरबारी जी. सर, आर यू अराउंड सर? नहीं, रामन सर इज. कैन आई गो टू गीता गुरु राव? आई एम आस्किंग हर टू अनम्यूट. गुड इवनिंग गीता जी. If you can unmute and start camera. Camera also you may start. The bandwidth is okay. Again आपने बंद कर दिया. You can, but I think you are unmuting and immediately muting. you, yeah, can speak. now you are. We can. अरे गया. I think आपका हाथ लग जाता है शायद फोन पे. Is it audible now? Yes. Perfect. Hello. Yeah. I'm not able to come in the camera. Okay. I'm sitting in my clinic listening to everybody. Okay. Yeah, I am from Dharwad. I have done my MBBS from Hubli Medical College. Oh, wow. So mine was an arranged marriage with Dr. Guru Rao. I am a family physician. My husband was a pathologist. When he was doing his PG, to somebody we came to know and then got married.
So those were days when we don't have any money. It was during 79. Every doctor was poor. Of course, now also something like that. Audible? Audible? Audible, Yeah. audible, very Hello? much audible. Audible. Okay. No, the screen is showing something else. So I had to shift from Dharwad to my husband's place in Bangalore. So that time he was doing a PG and having 500 rupees as a stipend. So we had to make a house within that amount, 200 rupees for the rent for the house, 10 rupees electricity, 70 rupees clinic bill, clinic rent and everything. Remaining maybe some 100 used to, but we were very happy during those periods. My house and the clinic were some 2 kilometers apart. So he had to finish his PG there in hospital and then come back home, and that was. He used to travel nearly 4 kilometers on Paidal jate the. I cannot speak much Hindi, so I'm not Please fluent go in that. ahead. Perfectly Yeah, fine. yeah. Then he used to come back home and then have food and then again travel for 4 kilometers. So we had to plan in such a way. Wednesday I used to take off from my clinic, so that we can move around together for some time. So then we shifted our house, and then that also was some 2 kilometers away. So after he finished his post graduation, he also started joining my clinic, and then we had to go home. And sometimes we feel so bored, so we used to buy some 4 and a half chana and then eating and then go, because we did not have money to pay for the bus. So underline that point. So but still we were really happy about it. And then things went off, and he took care of me like anything. uh, uh, I was little bit gusse ke aadmi, but he never complained, nothing. One day I prepared upma, and there was no salt in that. uh, he ate it coolly and then said, "Oh, yeah, Geeta, I have done it so nicely and other things." But when I ate it, I don't know how he very appreciated me. He didn't. He did not have a complaining attitude at all. So as you say, he used to bring some flowers. One tarkari vendor used to flower wali used to keep some flower. So almost once a week or twice a week, like that, that lady used to give me, "Amma, you take this flower for your wife. She'll be very happy." And he used to Malipu. He used to bring home. So all this, my family went on really nice. So there are no, what you can say, sorrow in that. So 2015, I lost him because of some major mistake from a doctor himself. Being a doctor himself, we faced that. The previous to that, he had some small hole in the heart, and it had to be rectified. He was then 67. So previous day we stayed in a hospital, and one bed was allotted to me, and then there was there, and we had to get ready by 4 o'clock, and we got up, and then there was only one bucket of hot water. I never tolerated cold water, so I told him, "You can utilize. I go home and then get my bath and come back." He said, "No, no. Anyway, you'll be here, so we'll share it." Half bucket he shared with me. Half of the bucket of hot water shared, and then it went on. But very next day, unfortunately, I lost him because of some doctor's major mistake. But the things we enjoyed together, it was almost 40 years of our married life, and we enjoyed it thoroughly. There was no, even though we were very poor that time, we enjoyed thoroughly. There were no, but almost 35 to 40% of our income was for charity. So where we practiced, we were in both in a private practice only. Our motto was to serve the people. So 40%, 35% was always a charity. And then it was really great. But he was very fond of my singing. And I learned sitar for some time. I used to finish my clinic by 2:30 and grab the lunch. And he used to take me to the Masterji's house where some half a kilometer also. I said, "I just can walk and then go." No, he said, "No, no, you'll be tired." So he used to send me there and bring me back.
And at 11 o'clock, I used to practice the sitar for nearly 2 hours. He never objected for anything. He was very fond of music and very fond of me. And our life was really great. Hardly I quarreled with him. So that was a great life I had. So God has bestowed upon me with a great life and two great children who now take care of me, and we are all one nice family. So that's my thing. Yeah, Gupta. Yeah. I think the best thing Thank that you you. did was the charity bit that you spoke about. Yes, Uh, gives yes, that yes, immense satisfaction and that fulfillment yes, that you get out yes, of yes, such yes. activities. Makes you Yes. a Still happy today, person. yeah, yeah. Yeah, now I'm practicing in a different area where my son has built a house. From that area, I get the patients. Now I'm 73 years old. 2 hours in the 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. I Seva. practice. People come from there, yes, yeah, and then they call me and then come. They adore me, and my husband adored me. So that was a great life God gave me. So no jagada, nothing. And of course, financial crisis was there, but it went on like that for some time, and then we overcame it. So that was extremely happy and contented life, I can say. So I think it is very it's loud all, and clear yeah, that money is not yes, necessarily the trigger definitely for not. happiness. Definitely not, sir. Money, because those days when we started our family, even we bought 10 paisa on coconut piece, not full coconut. Correct. So 1 rupee was coconut during 79. 1 rupee we couldn't afford. Now I have got a huge garden where I just donate my coconuts. So there All are some a produce. few plants here. Yes, I just give them off. Somebody say, you, why don't you sell? No, I said, I don't want, because I know what I underwent when I was poor. When we were poor, no relatives would peep in. So we were extremely happy for that. When then things took place nicely, and then it was wonderful. I led my life to my full extent, and then Excellent. I started, going into mule, and now recently I joined this. I'm enjoying this platform. So Fantastic. I think we should yeah, thank I'm happy. seniors Yeah, yeah. today. Yes. There's so many, we come to know so many people. It's our time to build up friendship also, no? So now Absolutely. I'm a little bit, and then, but of course, I've got all the commitment to look after my grandchild, and then ringmaster of the house to take care of everybody and all that thing. But I happily do it. So now I'm Wonderful. staying in a clinic. Fortunately, there are no patients. I was just listening to all this, so I was muted. I Okay. mean, it I was think not service orientation helps, and that is what has yes. going. Yeah. That's going on. Till my last breath, I would like to sing and do my service to people. So Thank you that is so much, more Geeta. yeah, That is very inspiring. yeah, Very yeah, yeah, inspiring. yeah. Thank you so Fantastic. much. Thank you so much for listening. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Raman sir, we tried to reach you. I think you were not around probably. You have anything to add? I think we are running short of time, but I would not like to miss your experience and input. If you can unmute and speak. Yes, sir. Good evening, friends. Very good evening. Today's topic is something for which I am not able to make any contribution, because when we were young, of course, you fell in love with so many girls. Every girl was beautiful, or all beautiful girls lived next door. Everybody fell in love, but nobody dared to talk it out. We were all very shy by nature. It is unthinkable that I could speak to the girl next door. That was there was a great shyness among boys and girls to communicate to each other. So all those loves died unsung. That was the sort of age in which I spent my young age. So there is not much by way of the so-called romantic love. Pre-marriage romantic love. Yeah, pre-marriage romantic love, or even after marriage romantic love, because romance as such that they existed only in fiction, in films maybe, but not in real life. So that is the way
we used to think about it. So, if you say that Valentine's Day is a celebration of love, not necessarily romantic love, but love between any two individuals as friends or healthy, yes, sir. I had a very great number of friends. Yes, there is that is something that may not quite match the tone of discussions that we are having now. So I am sort of a non-contributor to this discussion because the lifestyle that I knew of when I was young is far, far, far too different from what it is today. So anyway, Sir, I have seen. Raman sir, sorry to interrupt. Have you seen this movie Raman Thediya Seetai? An No. NTR movie. No, I have. I have not seen. You go to YouTube and see the very first scene in that movie is two very senior couple running around the bed, and the senior man trying to reach out to the lady, and they're like playing as kids. So I think you will be able to relate to that if you can see, because it need not be only young for romance to happen. It can happen anytime, or it can continue till whenever you want. Yeah, maybe, but at least my experience, I won't say perception. My experience is that romance existed only somewhere else, not in my life, something like that. So I'm sorry, I'm not able to contribute meaningfully to the discussion today. Thank No you. problem. Not at all. But do have a look at Raman Thediya Seetai. You will like it. I'll try to. The first scene. And the movie starts with that. So thank you so much, Raman sir, because we cannot take silence from you. So it is good that you spoke out whatever you had to speak. Matter of fact, I've always been too talkative, and people used to rationalize my speech. Please allow others to talk. Please do not monopolize things like that. But strangely today, my stock of whatever I have to say is not much. Thank you very much. Thank you so much, sir. We have just, I think we have already overshot, but I think Seema Agarwal has not spoken at all. Can I request her in case she is around, or whoever is around under the name of Seema Agarwal? Okay, no response for unmute. So I think I will request Jaya ji to say something because she has raised her hand. She has something to add to whatever she has already said. Sir, I wanted to add here, in those days, if you remember, Archie's greeting cards used to be there. Yes. It used to come in various forms for birthdays, for wedding anniversary and all that. So those days, people used to post those cards, buy those cards. That used to be very costly also. That they used to buy and send it for the respective occasions and all. So there was no Valentine Day celebration as such, but in those days also people used to send for birthdays or anniversaries and all that. Yeah, nowadays we don't find those cards much. Soft copy, soft cards they make. Soft cards. WhatsApp is there, so people keep on forwarding the messages. Just a happy birthday or happy anniversary. If you folks remember, sometime back, our friend Firoz had done a session on a tool called Canva. Yeah. Canva, we are able to do whatever we want. No, I mean yes. And yesterday, Madam Poonam Madam, she was teaching about making cards, Valentine cards. That also I was. So those days, only those cards used to convey the messages. Right. And as you said, that Raman Thediya Seetai movie, I have seen that movie, but I don't remember the scenery. But now, very recently, when
there was one serial going on, SPB's serial, Journal. Journal, one serial named Journal. Revati and SPB's that is a typical serial for related to our this today's topic. Okay. So if you feel it's right, you can watch that and give your opinion on it. I'm unable to watch too many of these serials. Yeah. Anyway, That is a continuous episode. Some episodes are there. So that, but it is a very good serial. Oh, okay. Journal. Which comes on which channel? I mean, it used to come in Prime Video. Prime Videos. It is there. Prime or Netflix. I don't remember now. It's 2 years back. I have watched it. Okay. And one more thing, sir. You have released that book, na, on film. Yeah, this day that year. This day. So I want to have one copy of that. I will ask Firoz to send me one. No, Or I will. you can share the link and maybe yeah. have it. Okay, no problem. I'll go through it. Thank you, sir. Thank you so much. So I think barring Seema Agarwal, rest of the people have all spoken. So I think we will close the session. Firoz, you have anything to add before we end? Or only Archana is there? Firoz is gone. Archana, is there anything that? Oh, nice. Firoz is also there. So in case there is anything more to say, then or else we meet next week, same time. Hopefully most of the people will be there, plus some new faces. Okay, so I'll end by saying Happy Valentine's Day. प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो. So let's just share love, spread happiness. Let it be a way of life. All right. Thank you so much for being a lovely audience and also sharers. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. मरने की हालत में पलंग पर पड़े